And secondly, as a citizen, सर आवाज प्रॉपर वे में नहीं आ रही। as वॉइस people, सर थोड़ा बेहतर कर दीजिए सर। सर आवाज समझ में नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही आवाज। now it is audible or not? सर एक बार रिजॉइन हो जाएंगे, शायद टेक्निकल सुनाई दे रहा प्रॉब्लम है, खत्म हो जाए। क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। आज क्लियर नहीं आ रही है सर माइक आपका आपसे दूर लग रहा है, जैसे दूर है। अच्छा, वैसे हमने तो माइक क्या कहते हैं दोनों लगा रखे हैं। अब कैसी आवाज आ रही है? अब कैसी आवाज आ रही है? अभी सही आ रही है सर। एक म्यूट कर दीजिए आप, एक म्यूट। कैसी आवाज आ रही है? बेटर सही आ रही है। बेहतर आ रही है। ठीक है आवाज? ठीक ठीक, कोई इको तो नहीं है? मजर साहब इको तो नहीं है? परफेक्ट है सर, परफेक्ट है। ओके, तो हम जो आपसे नो सर कह रहे थे कि I will be talking about sanitation in two things. First, what is sanitation? Secondly, we'll talk about as a citizen, as teachers in higher education, what can be done in our places where we teach, where we reside, as warriors or some people who are working for sanitation. So, if you see, whenever we used to enter a city, we used to be greeted by these scenarios. This is a common scenario when you enter into a big city. We are greeted with garbage. Garbage burning everywhere. We have all these garbage thrown anywhere, and the landfills are filled with garbage. So this was, and still some places, this is the scenario, and this is what we have to take care of. Otherwise, we can also become this only. Okay, now basically, what is cleanliness? If you are able to read this slide, there are two things here. First, let me read. Cleanliness is both the abstract state of being clean and free from dirt, and the habit of achieving and maintaining that state. Now, there are two things. First, it's achieving. We have to achieve that. But most importantly, after achieving, we have to maintain that. It's not that today we have taken a bath, today we have washed our hands, or cleaned our environment, but we have to maintain that state. Now, so it is very important that it has to be both achieved and maintained. This idea of cleanliness or swachhata is prevalent in all civilizations across all times, and this cleanliness concerns not only physical and mental health of human beings but also our spiritual development. We having 2nd October very close by. Mahatma Gandhi, who was striving for independence, who was languishing in jail for independence, he said that sanitation is more important than independence. आप खुद सोचिए, एक आदमी जो इतनी परेशानियां झेल रहा है, जेल जा रहा है, नजरबंद हो रहा है, वो कह रहा है कि स्वतंत्रता से ज्यादा मुझको स्वच्छता पसंद है. So this is what is very important. Now, every religion talks about cleanliness. Bible has many rituals of purification. Bhagavad Gita describes cleanliness is one of the divine qualities.
which one must practice. The दैविक चीज. Quran says he means Almighty loves those who keep themselves pure and clean. है ना? So this is the importance of cleanliness. Every religion, every civilization, they talk about cleanliness. Now, what is sanitation? It is a process of keeping places free from dirt, infection, diseases by removing waste, trash, and garbage. And not only the external environment, but our internal environment. Washing ourselves, drinking safe water, all this is sanitation. Now, why is it important? Why sanitation is important? You know, during the course of discussion, we will talk in detail also that sanitation is important for our health. Sanitation is important for it is a good economic investment, and it helps our environment. Not only that, it is achievable. The most important thing is here is that it is achievable. So when a thing is achievable, we can do it. Now, why it is important for health? Good sanitation, it can prevent us from diarrhea and also help prevent other serious diseases, which we'll be talking shortly. It's a good economic investment. How it's a good economic investment? When we practice good sanitation, our family saves money on healthcare and treatment. Further, it is important for social development. When we keep ourselves and surrounding clean, we fall sick less often and more likely to attain our work. And if we are healthy, we can build a strong society. Now, if we get rid of the waste properly, we help to protect water resources. It also means that we don't have to smell anything disgusting around us. So it helps the environment. And most importantly, better sanitation is possible. It is achievable. And it all starts with me and you. And this is what at the end of the we will be talking about how it is achievable and how it all starts with we and you. Now, what does poor sanitation cause? This poor sanitation gives many infections. It's an ideal opportunity to spread things which are causing illness in the community. And human excreta has been implicated in the transmission of many infectious diseases like cholera, typhoid, infectious hepatitis, polio, you name it and you have it. So, especially the human excreta. The other thing is open defecation. What is open defecation? People are relieving themselves in the open places. Now, why is it a concern? First concern is that because of open defecation, we have lots of worm infestation, especially hookworm infestation, and more than 200 millions are affected in India. Can you imagine 200 million? How much it is? If we talk about in lakhs, anybody? 200 million. 1 million 10 lakhs. 20 lakh 20 lakh? No, 1 million होता है 10 लाख. 10 लाख सर. तो 200 मिलियन कितना हुआ? 2000 लाख सर. 2000 लाख सर. 2000 लाख सर.
It's a 20 crore, sir. It's a Huh? 20 crore. Huh? 20 crore. 20 crore. 20 करोड़ तक। So can you imagine? This is the enormity of the situation. है ना? Now, just have a look at this slide. 1 gram of feces, feces means excreta, mal. 1 gram of feces contains 10 raised to the power 6 viruses. So 1 gram. Only 1 gram of feces has so many viruses. That is 10 raised to the power 6 virus. 1 gram of feces contains 10 raised to the power 5 bacteria. And 1 gram of feces contains 10 raised to the power 2 parasite. So 1 gram of feces is full of viruses, bacteria, and parasitic cysts. More importantly, the child feces contain more germs than adults. Now, remember this. After a few minutes, I will be using this information. The other thing about open field defecation is that women and girls face shame and a loss of personal dignity and risk their safety if there is no toilet at home. And we have to wait for dark to relieve ourselves in privacy. So there are mental issues, there are social issues, and there are medical issues. I told you that 200 million people are affected by worm infestation. So this is just because of one aspect is open field defecation. Now, the other, like if you see disease burden due to poor sanitation. Because of poor sanitation, there have been deaths because of cholera, because of diarrheas and dysenteries. Typhoid, one of a common infection, is related to to poor sanitation. है ना? So all these things are affected by poor sanitation. Ankylostomiosis, amoebiasis, roundworm infestation. These are worm infestation. They are because of poor sanitation. Now, you will ask why I am so much concerned about worm infestation. बार-बार हम कह रहे हैं कीड़ा हो जाता है, उधर hookworm बताया, यहाँ पे roundworm बताया. Now, amoebiasis and ankylostomiosis, ये भी हमारे worms हैं. इससे problem क्या है? Why are we concerned? We are concerned because these worm infestation, they are parasites and they eat up our nutrition. Most importantly, they cause anemia. Now, what is anemia? The blood is less in our body. It is called as anemia, especially the hemoglobin. Now, what will happen because of this? This will lead to reduced oxygen supply to our cells in the body. What will this lead to? This will lead to decreased work capacity, growth, decrease in growth, especially in children. Sir, So, sir, how we define disease burden? disease burden is very, like how many people are affected. This is the burden of the disease. Affected How out of total population. people, the people residing there. This is, I'm talking about India. So, uh, uh, I was talking about anemia because of worm infestation. Because of worm infestation. So, this worm infestation, if you see, ankylostomiosis, more than 200 million people. Amoebiasis prevalence is 15%. Roundworm infestation, 100 million children. All this is leading to anemia.
And what is the consequence of anemia? What is the consequence of anemia? Most important is decreased work capacity in adults. बहुत जल्दी थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो गए, काम में मन नहीं लग रहा है, थके जा रहे हैं. बच्चों में क्या हो रहा है? ग्रोथ रिटार्डेशन, attention deficit. I'm not saying that anemia is just caused by worm infestation, but one of the cause of anemia is worm infestation, and this is directly because of poor sanitation. We all know about cholera, diarrhea, and dysentery. Diarrhea, we all know. Dysentery is bloody diarrhea. If you have blood in stool, blood in feces, it is called as dysentery. The other consequence of poor sanitation is hepatitis. What is hepatitis? Jaundice, philia. It is because of poor sanitation. You have eaten a contaminated food, or you have drunk a water which is contaminated. And 1 to 5% in adults and 10 to 25% in children are affected because of poor sanitation due to hepatitis A infection. Now, some of us may say that I have got a vaccine against hepatitis. I will not have jaundice. No. The vaccine which most of us have been given is of hepatitis B. And I am talking about hepatitis A infection. Now, you will ask, why we have not been given hepatitis A vaccine? Is it not available? If is it available, then why we have not been given? Now, see, both, whether it is hepatitis A, B, C, or any other type of hepatitis, they all cause jaundice. Now, jaundice is not a disease. It is because of the derangement of liver function. अब हमारा liver अगर किसी तरह से प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, कोई उसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है या कुछ और हो रहा है, तो जॉन्डिस हो जाता है. Hepatitis A is the most common form of hepatitis, but it can be self-limiting. अपने आप से ठीक हो सकता है. होता सबसे ज्यादा है, लेकिन it can be self-limiting. On the other hand, hepatitis B, although not that common as hepatitis A, is dangerous. Why? Because it can lead to liver cancer. Therefore, both like everyone is being given hepatitis B by government. If we want to take hepatitis A vaccine, then we have to buy it and get it. So I wanted to clear it because many of us might think that since we have been given a vaccine, hepatitis vaccine, we are safe from hepatitis. Yes, we are safe from hepatitis A, but not against hepatitis A, C, and other forms of hepatitis. Okay, so now if you can easily see that disease burden because of poor sanitation is enormous, especially the diarrheal diseases, jaundice, and typhoid. The other diseases because of poor sanitation are vector-borne diseases. Now, what is a vector? Anybody? What is a vector? So carrier. Yes, sir. Carrier Carrier. who Carrier. transform the Very, parasite of very like. visceral leishmaniasis, sir. Yes. See, vector is a living organism which carries the microorganism which causes a disease from one place from where it is residing to the human being. It's a vector. Somebody said carrier.
for all practical purposes, yes, it's a carrier. But here, when we use the word carrier, vector, not carrier, we talk about arthropods, usually arthropods. Now, the common vector-borne diseases are malaria, dengue fever, filaria, Japanese encephalitis. We all know about malaria. It is caused by a bite of a mosquito. Okay, but mosquito is not the causative organism. It's the parasite, the other parasite, the protozoa, which is causing the malaria. Now, how many of you know that we are in dengue season now? Most of us? Yes, sir. In Bihar, sir, Yes. Bhagalpur. Yes, sir. Yes, sir. Bhagalpur. Everywhere. Yes, sir. Everywhere. Dengue is everywhere. Again, Yes. this is a vector-borne disease. No, this is a vector-borne disease. In eastern Uttar Pradesh and parts of Bihar, we have another problem, that is filaria. Okay, again a vector-borne disease. And then again, in eastern parts of Uttar Pradesh and parts of Bihar and other parts of the country also, we have another very important disease called as Japanese encephalitis. Again, it's a vector-borne disease. If you must remember, Japanese encephalitis is a disease where, especially children, they become unconscious. Encephalitis means infection of CNS. So, again, a very important disease which can lead to death or disability. So, again, it is because of poor sanitation. Poor sanitation. Now, how will you say that? Why these diseases are because of poor sanitation? Where does mosquito thrive? Where does mosquito reside? It is there when there is stagnation of water. Especially dengue fever. What happens? This mosquito, what happens? This is happening on where there is artificial collection of water. How artificial collection of water is happening around us? Anybody? How is it happening? Artificial collection of water. Yes, ma'am. You were saying something. Stagnation. Yeah, I'm saying, madam, that because of artificial collection of water. What is artificial collection of water? Like we have rivers, ponds, all these things. They are usually not artificial. They are natural. But what is Drainage from artificial industry, collection sir. of water? Stagnation of water from drainage, drains and all. Like in bathrooms, toilets. I think it affects due to poor drainage system. Okay, one That is poor drainage sometimes system. our Drainage body is system. also a reservoir of some parasite. Pardon, sir? Our body is also a reservoir of some explode of parasite. Just like लेकिन सर हमारे यहाँ तो पानी का स्टैग्नेशन नहीं हो रहा ना बॉडी में. हम एनवायरनमेंट सब की पुअर बात कर रहे हैं ड्रेनेज सर. सिस्टम की वजह से होता है, ज्यादातर स्टैग्नेशन होता है वाटर का. Poor drainage system. One. The rainy season. Any other? Also, Sewer system, sir. fever Okay. system. Rainy season में पानी बढ़ जाता है. And sir, poor waste management. Poor There waste is a management. problem of waste management. We Geography- don't have Okay. efficient system of Anything waste else? management, like urban waste management. Anything else? Sir, water is stored in water coolers, flower सर pots. घर में जो कूलर में पानी भरा रहता है. If rain water is stored somewhere. Sir, we don't have enough. नालियों में जो पानी इकट्ठा होता है सर, दैट इज द मेन काज फॉर हियर सर्वाइवल.
Sir, I think we don't have Okay, okay. I got your we don't point. have I got your enough point. treatment plants. We have Okay. enough. We don't have enough treatment plants. अभी देखिए, इन आंसर्स से भी हमको एक पैटर्न पता चल रहा है. Except for one or two people, all of us have tried to talk about those conditions or those factors in which we are not involved. Like as a citizen, we are not involved. See, yes, poor drainage system, non-removal of garbage, these are the problems. लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा था? Around us, how we have artificial collection of water. The most important हम लोग जो is चापाकल सर गांव में रखते हैं, जो नहाते चापाकल, वहाँ एक गड्ढा सर खोद देते हैं, जिसे पानी जमा रहता है, मतलब महीनों, वो सूखता नहीं है. वो तो सर बहुत बड़ा रिजर्वायर है पैरासाइट का. सर कई बार होता है जो हम अपने वाटर टैंक को की सफाई नहीं करते हैं और जो है फॉर मंथ्स और 2 मंथ्स 5 मंथ्स इवन की वो लॉक्ड रह जाता है. वो एक एग्जांपल ढका हुआ रहता है. वाटर कूलर, इन वॉशरूम अब सर. देखिए, सर घर में जो घर कूलर में होते हैं कूलर में लगे पानी हुए, भरा रह रहा है, मच्छर हो जाते हैं उसमें. देखिए अब हम लोग जो है ना थोड़ा सा करीब आए, है ना. देखिए, गांव को तो हमने कह दिया कि गड्ढा खोद लेते हैं. पहले तो हमने अपना गड्ढा घर में ही खोद रखा है. वो गड्ढा कैसे खोद रखा है? कि जो आरओ का पानी है, कौन हम लोगों में से ऐसा है जो आरओ नहीं यूज कर रहा है ना? उसका पानी कहाँ जा रहा है? एसी जो हम यूज कर रहे हैं उसका पानी कहाँ जा रहा है? अच्छा चलिए, हम एसी नहीं यूज कर रहे, हम अभी किसी ने बहुत अच्छी बात कही, वाटर, ये जो डेजर्ट कूलर है इसका पानी, ठीक है, हम कुछ नहीं यूज कर रहे, हम बहुत शौकीन हैं, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ कीपिंग फ्लावर्स इन आवर हाउस. हम एक फ्लावर पॉट खरीद के लाते हैं, उसमें पानी, वी कीप वाटर इन दैट वाटर. अभी दीपावली आ रही है, बहुत जल्दी आएगी. वी विल पेंट आवर हाउसेस, we'll clean our houses, we will bring best quality paints for our houses. The paint box will be on our roof. हम फिर से यूज करेंगे उसको अगली बार डिब्बे को, है ना, हम डिब्बा यूज करेंगे. लेकिन अभी जब बारिश होगी उस डिब्बे में पानी आ जाएगा और उसको में कौन थ्राइव करेगा? ये डेंगू का मच्छर. So basically vector-borne diseases are directly related to our behavior. I'm not saying that the civic department has nothing to do with, but this is our factors which are contributing to vector-borne disease. Okay, so we all know. सर एक और एग्जांपल सर हम देना चाह रहे थे सर. पीके कालाजार के केस में अगर वो अनट्रीटेड रह जाता है तो उसका बॉडी में पीकेडीएल डेवलप कर जाता है, और पीकेडीएल इज आल्सो रिजर्वायर ऑफ हिज बॉडी एज रिजर्वायर ऑफ पैरासाइट. तो बालू मक्खी क्या करता है, उसको काटेगा और पड़ोसी के यहाँ जाके उड़ेगा या उन्हीं के घर में फिर दूसरे काटेगा, उसको भी कालाजार हो जाएगा. तो उसका बॉडी उसे रिजर्वायर का काम करता है जिसको पीकेडीएल कन्वर्ट हो गया. Human is an enemy of another human. In infectious disease, we teach that a human is enemy of another human. सिर्फ इसकी नहीं, कालाजार की नहीं सर, सब में ऐसे ही होता है. कोविड कैसे फैलता था? एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को. ट्यूबरक्लोसिस कैसे फैलती है? एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को. चिकन पॉक्स, मीजल्स, ये सब ऐसे ही फैलती है सर. इसीलिए तो इनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, है ना. इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज इसीलिए तो कहते हैं सर, है ना. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ पुअर सैनिटेशन. सो नाउ if you see, where does this housefly sit? Housefly is famous agent of fecal-oral transmission. It is a very famous agent of fecal-oral transmission.
वापस जाइए हमारी 5 मिनट पहले वाली स्लाइड पे कि 1 gram of feces was containing 10 raised to the power 6 viruses, 10 raised to the power 5 bacteria and 1000 cysts. तो ये मक्खी जब उस फीसिस पे बैठती है और उसके बाद एनी फूड आर्टिकल के ऊपर बैठती है तो वो उस फीसिस में जो वायरसेस, बैक्टीरिया और सिस्ट के कुछ अंश वो हमारे खाने पे लगा देते हैं. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट cause of many diseases, cholera, diarrhea, typhoid. All this is because of this fly. And fly is the best indicator of poor sanitation. आप हमारे घर पे आए और मैं कहूं कि भाई मैं तो डॉक्टर हूं एक और मेरे घर में सुबह शाम पोछा लगता है, I get my house cleaned very nicely, but if you are able to see a fly in my house, you can laugh at me because fly is the indicator of poor sanitation. Okay, so this is something which we have to take care. The other thing which is related to our behavior, public spitting. TB has a devastating socio-economic cost in India, with around 450,000 people dying of TB each year. 1,000 every day. Now, we started somewhere around 9 o'clock. Now it is 9:40. 40 people somewhere have died because of tuberculosis. And this habit of spitting is one of the methods by which we are spreading tuberculosis. We means a person who is suffering from tuberculosis. There are many other ways, coughing, sneezing, but coughing is something like that you are having some problem, therefore you are coughing. Sneezing is again in not your control, but you can always cover your face. But spitting is something which is habitual. So this can be one of the factors of spreading tuberculosis. So this is again a very important thing. Somebody was talking about, rightly talking about poor solid waste and liquid waste disposal. And this poor disposal is a nidus for mosquito, for flies and everything. Okay, so do you know why this animal is important as far as sanitation is concerned? You are able to see a pig. Now, how is it important? Especially, I wish to get an answer from anybody from Eastern UP and Bihar. Anyone? This is the thriving area for various viruses and bacteria and disease, several vectors. Yes. I know. Thank you for your answer. The thing is that when I was talking about Japanese encephalitis, and one of our participant teacher was talking about Kala Azar. How is it getting transmitted? This pig is an amplifier of Japanese encephalitis virus. When this virus enter into pig, this gets multiplied more, and from the bite of the mosquito from the pig to the humans leads to more virus
inside us. So it's also called as a amplifying host. Amplifying host, amplifier. Amplifier का नाम सुना है ना, जो sound को हम बढ़ाता है. Anything which increases something, so it is called as amplifier. So not only this disease, but many other diseases. Okay. Now, very simple way how diseases are studied, especially the diseases which we are talking about of poor sanitation. If somebody poops in open environment, flies feed and legs on it. And if we don't wash hands with water and soap after pooping, germs remain on our hands. And when flies land on the food, or if we touch food with unwashed hands, or germs are carried over. And if we eat food with germs on, these germs enter into our body. And this is how we get sick. So two things here. First is that somebody is pooping in the open environment. The other thing is that we are not washing our hands properly after pooping. So now, can anybody tell what is this? What is this? फंगस फंगस ग्रोथ. या मतलब हैंड के ऊपर फंगस लगा वायरस हुआ है. है. यस सर, हैंड बैक्टीरिया फंगस ऑन कॉलोनी है. वायरस ऑन हैंड. मेनली फंगस. एक तो पहले इसको बहुत अच्छे से देखिए. ये एक राइट हैंड impression है. A 6-year-old child was playing outside and he has come inside the house. Her mother was a microbiologist and she took the imprint of the hand on a petri dish. And this has grown now. If you can see all these colorful things, these are microorganisms. These are microorganisms. कुछ लोग कहते हैं ना कि seeing is believing. तो उनके लिए है ये कि हमारे हाथ में क्या-क्या चीजें होती हैं. Now this is under a microscope. If you are able to see. Now this I got it somewhere in social media. And the description was written there. So I thought that this is something interesting which can be shown to everyone. Now, till now, we know what are the bad consequences of sanitation. है ना? वो होता है ना कि हम किसी के पास जाते हैं, मेरा हाथ देख लो, तो फिर वो देख के बताता है कि भाई आपका तो सही नहीं चल रहा है मामला, अभी बहुत परेशानी आएगी. 2-3 परेशानी वो बताता है ना. फिर हम उससे कहते हैं कि भाई आपने मेरा हाथ देखा, कुछ तो उपाय बताइए. तो अभी तक के जो हम और आप बात कर रहे थे, what we were discussing was the problems, है ना. अब हम लोग डर चुके हैं, है ना. अब हम दूसरी फेज में आ गए कि बस अब प्रभु आप कुछ बताइए कि हम कैसे हम जो है इन सारी चीजों से बचेंगे. अब यहाँ पे हम लोगों को, अब हम कोई आपको ना कोई मंत्र बताने जा रहे हैं और ना ही कोई हम अंगूठी या कुछ जिसे कहते हैं ना तावीज देने जा रहे हैं. इसमें जो भी करेंगे we have to do it together. Now there is a concept of Swachh campus. There is a old Native American proverb which says that environment, we have not inherited it from our forefathers. We have borrowed it from our children. Now, what does it mean? Anyone? Environment, we have not inherited it from our forefathers, but we have borrowed it from our children. What does it mean? Anyone?
So the surrounding ma'am. which we are getting nowadays means Hmm. that is changing with time, Mhm. but it is continuously changing with time. Sir, Anyone borrowing else? means we have to. Sir, borrowing means we have to give back. हम अपने बच्चों को देंगे, हम अपने तो फादर ना से ले देना लेंगे। नहीं है मैम, यहाँ पे देना नहीं है। देना होता तो कहते कि No, sir, बचने से आ रहा है। sir, I mean to say सर that हमको ये विरासत में नहीं मिला है। नहीं सर, ये हमारे बाद हमारे yes, yes, anyone can हमारे say फादर ने yes. हमको विरासत में नहीं दिया है, जनरेशन का है जिसे हमको हम यूज उधार कर रहे मिला है हैं। फ्यूचर जनरेशन के लिए। Yes, yes, yes. हमको उधार मिला है, हमको विरासत में नहीं मिला हमको है। ये उनकी चीज है, ये उनकी चीज है। हम्म। अगर हमने अब एक चीज किसी से हमने कोई चीज बोरो की है तो हमको उतनी ही लौटानी है। we have to return it as it is, is the sir. same thing. Yes, yes, sir. So you were saying something? Correct. You have to return it as it is, sir. जैसे मैं वैसे ही Yes, return yes, करना है। yes. वरना क्या हो जाएगी? हमने किसी से मांगे 10 रुपए, तो हमें 10 ही रुपए लौटाने हैं ना। जी सर। नहीं सर, ब्याज में भी तो लौटाना होगा, एक्स्ट्रा भी तो देना होगा, एक्स्ट्रा भी देना होगा। मैं कुछ Yes, very कमियां good. मिली हैं That उनको is- सुधार भी तो That is something very good. That is something very good. है ना? Okay. We have to pay interest. We have to pay for that. हम कह रहे हैं इंटरेस्ट ना दो, कम से कम मूल ही लौटा दो, है ना? So we have borrowed it from our children and we have not inherited from our forefathers. Now, what is Green Campus? As per the university grants notification, a green campus is a higher education community with optimum land use, environmental planning, and resource management. So there are three things. First of all, it's a higher education community with optimum land use, environmental planning, and resource management. That is, improving energy efficiency, conserving resources, enhancing environmental quality, including habitat preservation, healthy living environment, and use of renewable energy and management of wastes and water recycling. Now, these buildings within the campus should be based on green building concept to the extent possible. So, it is, remember, if you see this definition, somebody was very particular about definition. The UGC says a green campus. अब देखो हम लोग क्या समझते हैं कि पेड़ लगा लेना. Yes, it is one of the part of green campus, but basically it's a wider term. It's more holistic term. It is optimum use of resources, and it is just not planting trees. It means that we have to preserve our environment. We have to use renewable energy, and we have to manage wastes and water recycling. Now, the universities mirror the principles of green institutions, and we should endeavor to extend learning beyond the classroom, to inculcate and develop responsible attitudes, habits, and lasting commitments to Swachhata, be it at home, campus, or in the wider community. Now, there are some practices which have been followed in exemplary institutions, which have been portrayed to serve as guideposts. What are those? Sanitation and hygiene, waste and water management, green cover, and energy conservation. Now, what all higher education institutions or university can do? Now, first of all, we have to build a consensus for maintaining clean and green campus. So
this should involve student, faculty, as well as the campus level. We have to facilitate design of specific interventions for making the campus clean and green, following the international standards and accepted parameters. We have to monitor the existing environmental performance of the campus, and then we should have a step-by-step guide for making the campus clean and green. So I think there is a consensus everywhere that we have to maintain clean and green campus. It is now the second and the third thing: facilitation and monitoring. And we all have consensus that everyone wants that we should be having a clean and green environment. So it starts from the top. Vice chancellors, directors, principals, all people who are there at the helm, they should ignite the spirit. First of all, we should provide resources for respective faculty to integrate Swachhta and sustainable development aspects and perspectives into their existing courses. Develop and launch faculty training programs, hold seminars on Swachhta, including field works and demonstration in teaching methods. Now, if you say that why we are having this lecture, this is part of faculty training program. It is just one aspect. Now, why are we holding seminars on Swachhta? Because we want to increase awareness. So this is the starting point. Most of the universities have dean students affairs. So work with the counseling team in creating and implementing the orientation program for first timers. We can explain the rules to follow for a Swachh campus. The other thing is NSS. Many of us might be program officers of NSS. We can head the Swachh team of all departments. We look into overall aspects of Swachh campus initiative. We can involve NSS members in Swachh initiative. We can do a survey in the campus, sometimes even conduct a surprise visits, and we can motivate students for smooth conduct of the Swachh campus initiative. So we had vice chancellors or the directors, they have their role, then the head of the faculty, and we have NSS. So basically, we should have a network for Swachhta. If you can see, there are constant communication and intermittent communication. So we have campus officials, we see deans, head of the departments, trustees, and then we have the faculty, the professors and the lecturers, the academic programs, and all this. Then we have Swachh student teams, enthusiastic students forming energetic student team for innovative campus reforms. And then we can have a Swachh admin group, the facility managers, recycling coordinators, energy managers. So this is one. And then we can have alliances with residents, establishments, and schools within the campus, the funding agencies, non-profit organizations, the government officials, media, celebrities, and religious leaders. So basically, it is not that only one person can do. It's not a one-man show. So we should have a network. First, within our campus,
faculty level, group of faculty people, student level, group of students, है ना? And then after trying ourselves, we can seek help or some alliances with other agencies. So this is what we are expected to do. Now, we can institute the Swachhta policy. Achha, remember, whatever I'm talking about, this is from the guideline from MHRD. I've borrowed it from there only. Okay, so it's a very standardized document which I am sharing with you. Right? So sanitation and hygiene policy, maintenance of cleanliness and institutionalization of monitoring process, water conservation, optimum use of water, reuse of treated water, water saving appliances, and water recycling. Now, many of us are doing things. So what do we mean by optimum use of water? Anyone? What do you mean by it? So optimum means as per need, whatever is essential. Whatever. So what is essential? So for our daily needs, as per our domestic and daily needs. My need could be washing my car daily. Is it optimum use of water? No, it's not. No, sir. No, sir. Sir, no, sir. No. Adequate use of water. No, sir. Adequate use of water. So like Reuse of treated water. Need based use of water. Need use. So what is the reuse of treated water? मतलब फर्दर जो हमारे इन्फ्लुएंस आ रहे हैं डिफरेंट फैक्ट्रीज से उसको हम ट्रीट करके हम यहाँ पे ना पर्पस के लिए यूज करें। अपने घर की बात कर रहे हैं, आपने कैंपस की बात है ना जैसे आरओ के पानी यूज कर सकते हैं। आरओ के पानी कैसे यूज कर सकते हैं एसी सर एसी का वॉश पानी बेसिन का पानी क्लोथिंग just a minute, madam. Just a minute. Somebody talked about one of our teachers said that two things. One was RO water, other was air conditioned water. How can we use it, sir? Sir, it can be used for growing up ornamental plants, sir. First, we have to collect that water, no? In metropolitan cities, vertical farming is going on. If we go Delhi, I'm they are the not, vertical sir, farming. Delhi, I'm not talking about They are using the same anything which principle, sir. what are we can do it or not at our homes? We can do, sir. sir. Okay, Washing one clothes thing we can do. RO wasted water. हम लोग सर ये बताइए कोई यूज कर रहे हैं ऐसा काम कर रहे हैं? सर मैं करती हूँ। Yes, sir, I'm using. सर हम स्टोर दो करते दूसरी हैं आरओ मैडम के बोल वाटर रही को हैं, तीन मैडम ने कहा, बट व्हाट अबाउट जेंटलमैन? सर यूज कर रहे हैं सर, और सबसे बेस्ट जो है सर प्रैक्टिस ये हो सकता है जो हम जो अपने घरों में लाइक की वेजिटेबल्स या फिर चावल इस तरह की चीज जो हम किचन में वॉश करते हैं उन वाटर्स को अगर हम और कहीं कलेक्ट कर लें और फिर जो है हम लाइक कि अपने कैसे कलेक्ट करें सर? यूज कर सकते हैं। कैसे कलेक्ट करें सर? सर हमने किचन में एक एक्स्ट्रा बकेट रख रखी है उसके लिए। एक बकेट में मैडम की बात सुन रहे हैं ना? सर हमने आरओ के वाटर को अपने गार्डन से अटैच कर रखा है तो वाटर जो है गार्डन में So one thing is that first of all we are doing it. Second thing is that how we are doing it. Madam has said that she has connected the water pipe to her garden. सर जो कह रहे थे वेजिटेबल्स और राइस और दाल जो हम धोते हैं तो सर कैसे धोएंगे उसको, किस तरह से धोएंगे? हम जो पानी को कंजर्व कर लें इन अ बकेट ऑफ वाटर सर, ओके, और हम अपने सब्जियों को लाइक के जो भी हम यूज करने वाले हैं उनको पहले धोते हैं। जनरली होता है क्या लोग जो है नल खोल के फिर उसमें धोते हैं और सारा पानी वेस्ट हो जाता है। तो अगर हम किसी बकेट में हम वॉश करके और फिर उस बकेट के वाटर को हम जाके और अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं सर। अच्छा सर, मान लीजिए हम रहते हैं
फ्लैट में, गार्डन Yes, तो sir. हमारे पास है नहीं। यस सर। यस सर। अब क्या करें? सर तो क्लोथ्स उस को वॉश करने के लिए यूज कर सकते हैं वाटर को कलेक्ट करके। अच्छा देखिए मैडम, अब यहाँ पे हमारी जो थोड़ी देर में बात आती है, हम यही डिस्कस कर लेते हैं एटीट्यूड की। अब मैम ये लेबर एग्जॉस्टिव चीज हुई है ना। देखिए पानी को पहले हमने कलेक्ट किया, रखा, हमारे पास जगह होनी चाहिए कि उस पानी को हम स्टोर करें, है ना। ये टीडियस जॉब है भाई हमारा। तो ज्यादातर हम लोग मैडम हम लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, है ना। हम ज्यादातर तो वॉशिंग मशीन में ही तो धोते हैं ना। हम कोई अब बाल्टी में तो कपड़े धोते नहीं है ज्यादातर, या बहुत कम लोग होंगे जो हम लोग। अब इस पानी को पहले हम क्या कहते हैं, या उस पानी को हम वॉशिंग मशीन में डालें, तो ये आसान काम नहीं है। दीज ऑल थिंग्स आर इजीली सेड देन डन। प्रॉब्लम यहीं पे आती है, सर यही मैं ऐसी कहना चाह रहा हूँ। हाँ बताएं बताएं। सर ऐसी जो है वॉशिंग मशीन और ऐसी मशीनें बने जिसमें कम से कम पानी का यूज हो, और जैसे वेजिटेबल्स भी धोनी है, जैसे बर्तन हम लोग धोते हैं, तो ऐसी मशीनें आए जो हम लोग यूज करें तो पानी उसमें कम लगे। अब मैम देखिए मैं हमने सही क्या कहा किया मैम, ना, जैसे आपकी बात जापान सही में भी है। सर मैं कुछ बात कहूँ? जी फरमाएं। जापान में भी टॉयलेट इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि वॉश बेसिन का पानी उसमें जाए, ऊपर लेकिन एक यहाँ पर कम पॉसिबल नहीं है। सर सर जिन्होंने सर जापान इसका का एक एग्जांपल दिया, सर एक आप सर सोशल मीडिया पे मत जाइए, वहां पे आज भी एक सेकंड चीजें जारी होती हैं, है ना। सर मैं कुछ कहना जी चाहता फरमाएं। हूँ। पानी के सर जो चूंकि हम लोग जो कह रहे हैं कि ऐसी मशीन आ जाए वैसी मशीन आ जाए, मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। इतना इलाहाबाद में गांधी जी आए थे, तो वो उनके लिए एक बाल्टी पानी रखा गया था स्नान करने के लिए, और उसी बाल्टी से पानी से वो अपना धोती होती भी मतलब धुल देते थे। तो चूंकि गांधी जी थे तो भीड़ भाड़ की जगह थोड़ा सा हो गया था, तो उनका बाल्टी का पानी किसी से टकराने की वजह से उसका आधा से कम थोड़ा हिस्सा पानी गिर गया। तो फिर नेहरू जी ने कहा कि भाई दूसरा पानी ले आओ, तो गांधी जी ने वहीं पे मना किया, कहा कि मेरे हिस्से का जो पानी था उसमें से भले कुछ गिर गया, लेकिन मेरे हिस्से में एक बाल्टी ही रोज है और मुझे फिर उसी में नहाना है, उसी में अपना। तो गांधी जी ने उसी पानी में अपना नहाया भी और अपना धोती भी धुली। सर वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड सुनिए बात तो सुनिए। अरे भाई पूरा तो सुनिए, सुन लीजिए। वी शुड बी पेशेंट इनफ। जैसे क्या है कि जो हमारा नैतिक बल इतना कमजोर हो गया है कि आप ये देखते हैं कि जब आप बाथरूम में नहाते, जहाँ पे स्नान घर होता है वहां पे बहुत सारे लोग नॉर्मली बाथरूम कर देते हैं। ये बात अगर शिकायत गांधी जी के पास गई तो गांधी ने इसके लिए एक दिन का आपको मौन व्रत रखा। मतलब नैतिक रूप से हम खुद इतने कमजोर हो गए हैं कि हम चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं और उसके दूसरे विकल्प पर ध्यान देते हैं कि हमको मशीन आ जाए जो ये सारा कुछ ठीक करके दे, लेकिन नैतिक रूप से हम कमजोर बने रहेंगे हमेशा। ऐसा मेरा मानना है कि थोड़ा नैतिक रूप से हमें भी मजबूत होना पड़ेगा। अगर हम जा रहे हैं बिल्कुल हमको मग लेके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना खोल के। मेरा कहना है कि मैं जो स्नान करता हूँ, जो स्नान बात है करने ना में शरीर वो भी पानी गया, इक्वली कपड़ा इम्पोर्टेंट धुला, है। बस वो जो पानी को बिल्कुल सही स्टोर निर्भया जी, बहुत करके अच्छे। उसको अगर मैडम सर एक हम मिनट, जस्ट एक मिनट। व्हाट सर वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ये एक ऐसा नहीं है कि ये कोई फेरी टेल है। समटाइम देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम किसी अगर कथा में जाते हैं या किसी मोटिवेशनल टॉक में जाते हैं, वो भी तो हमारे पूर्वजों के बारे में बता रहे होते हैं, एंड वी टेक मोटिवेशन फ्रॉम देम। सी व्हाट सर वाज ट्राइंग टू से इज दैट वी should not be totally dependent on others. Yes, in the era of technology, the engineers, the scientists have the responsibility to make gadgets which are environmental friendly, and things are going. अगर आप देखिए ऐसा नहीं है कि environmental friendly चीजें नहीं हो रही हैं। पहले हम 200 वॉट का बल्ब इस्तेमाल करते थे, अब देखिए एलईडी आ गई, है ना। तो ऐसे ही पहले जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते थे या टीवी होते थे वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे, अब कम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। सो इट शुड बी दैट टिल द टेक्नोलॉजी इज नॉट अवेलेबल वी शुड
try to use these things judiciously, है ना, बहुत important है ये. What Sir, मैं I was ये trying to emphasize that we have to make extra effort for water conservation. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं जो डुएबल है. ऐसा नहीं है कि ये जो मैडम लोग बता रहे थे डुएबल नहीं है, बट दे आर आइडियल. अगर कोई केमिस्ट्री का यहाँ पे टीचर हो तो वो PV इज इक्वल टू NRT वाला फॉर्मूला है आइडियल गैस का. लेकिन जैसे we can't we avoid using a shower, है ना, होता है ना, let's take a shower. अब तो हम बात नहीं कहते हैं, यूज करते हैं वर्ड शावर. One shower uses water more than if we are using water from bucket. This is one thing. When we are brushing our teeth, when we are shaving, we can even जो हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वजू करते हैं तो हम टैप को बंद कर सकते हैं उस वक्त. तो ये सारी चीजें जो है हमको देखनी है. अभी बहुत से लोगों ने वाटर रिसाइकलिंग की बात की, पर प्रॉब्लम आती है दो चीजों में. रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर. वो जो RO का पानी था जो हमारी सब क्या कहते हैं और चीजों में हम यूज कर रहे थे, अगर हम स्टोर करके अपने कार को धोने के लिए, अपने स्कूटर्स को धोने के लिए या मॉप करने के लिए, इसमें को हम आसानी से यूज कर सकते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, we all know that it is now getting mandatory and many of the new buildings, rather all of the new buildings are using rainwater harvesting. So this is something which is very important. इस अगर चीज सर पे थोड़ा सा नहाने के हमको पानी ध्यान को देना स्टोर होगा. करके उसको टॉयलेट में यूज करें तो बहुत पानी Yes, सेव किया जा सकता बिल्कुल है. सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, है ना. नाउ वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, बट सर एक प्रॉब्लम आएगी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी वी शुड फॉलो. देखिए बचपने से हम लोग 3R सीख रहे थे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड 2 more, रिफ्यूज and regenerate. Now what is reduce? We reduce means that हम waste को, generation को reduce कर दें. How can we reduce it? By totally discouraging ourselves by single use of plastic. यहाँ पे सिर्फ प्लास्टिक, क्योंकि हम वेस्ट की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने प्लास्टिक की बात की. अदरवाइज किसी चीज के लिए भी हो सकता है. आप पानी को यूज करना कम कर सकते हैं, बिजली को यूज करना कम कर सकते हैं, व्हीकल्स को यूज करना कम कर सकते हैं, इवन खाना जो है वेस्ट करना रोक सकते हैं. सो रिड्यूस मीन्स दैट वी reduce the use of plastic and especially single use plastic. What are the single use plastics? Commonly used single plastic is the bottled water which we are drinking. अब हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम बॉटल मांगते हैं. हम पहले आप पूछते थे कि आपके यहाँ RO है, अब RO नहीं पूछते, सीधे बॉटल वाटर पे आ जाते हैं. The use of straw, the use of sachets, ये जो जैम के सैशे आते हैं, हमारे क्या कहते हैं केचप्स के सैशे आते हैं, शैम्पू के सैशे होते हैं, ये सारे सिंगल यूज प्लास्टिक है. Even the pens which we are using, they are single use of plastic. Then reuse, very important. हम उसी चीज को बार बार इस्तेमाल करें. Recycle, हम उसको किसी और चीज में इस्तेमाल करें. अब what is refuse? Refuse mean that we refuse using these things. I give you an example. There are 2 situations. एक हम मॉल में गए और जब हम अपना बिलिंग कराते हैं तो वो पोलाइटली पूछता है कि डू यू नीड अ कैरी बैग सर. हम कहते हैं नो. हमने रिफ्यूज किया तो पीछे जो खड़ा होगा कहेगा, बड़ा खुश होगा, कहेंगे देखिए ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली आदमी है, ये रिफ्यूज कर रहे हैं. उन्हें नहीं मालूम कि वो 25 रुपए मांग रहा है, इसलिए सर जो है रिफ्यूज कर रहे हैं.
वही सर सब्जी वाले के पास जाते हैं, आलू और प्याज खरीदते हैं, उससे कहते हैं डबल पॉलिथीन में लगाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं मांग रहा है, वो पैसा नहीं मांग रहा है। मॉल में पैसा मांग रहा था, हमने रिफ्यूज कर दिया, यहाँ डबल मांगा। रिफ्यूज कहाँ करना है? जहां हमारा इख्तियार हो, where we are in control. Like, so we have to refuse that sabzi wala, that bread wala, that we will not use this plastic carry bag. So refuse, we have to refuse the use of plastic. अब यहाँ पे अगर हम छेड़ दें तो सब शुरू हो जाएगा कि गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए और ये कर देना चाहिए। गवर्नमेंट को जो करना है वो करेगी। जब डिमांड नहीं होगी किसी चीज की तो खुद ब खुद उसकी क्या कहते हैं, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। सी, इट शुड बी बोथ वेज। वी शुड नो आवर राइट्स, बट वी शुड इक्वली should know our responsibilities also. So reduce the waste. ये जो मैंने आपको शुरू में स्लाइड दिखलाई थी, वहां पे 10% ऑफ द वेस्ट सिर्फ पहुंचे, बाकी सब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रीजेनरेट में चला जाए। Banning all plastic disposable items from the campus is the first step. हम अपने कैंपस में तो बैन नहीं कर पा रहे हैं। We are talking about the city and other places. So this is very important that it should be done. Then energy conservation policy. We should, जो टेक्नोलॉजी की अभी एक मैडम बात कर रही थी, she was very correct. Solar energy and reduction in energy consumption through technologies and management process. हम कमरे में बाद में जाते हैं, पहले से ही प्यून से कह देते हैं कि हमारा एसी चला देना। When I enter into my room, it should be chilled. घर पे ऐसा नहीं करते। घर पे तो देखते हैं कि अगर टेम्परेचर ठीक हो गया तो ऑफ कर दिया। Switch off the electric gadgets when not in use. Especially, we are keep on charging the mobile. We keep the fan working. All these things have to be taken care of and replace those items which are using more energy with good or efficient energy appliances. So this is something which we have to take care of. I'm sorry, I'm not able, I don't know, I think I have mistakenly used a slide which is different. Our university is one of the leading university of utilizing solar energy. Our 33% of the energy consumption is from solar, and this is well documented in the government gazettes. So this we can do. Similarly, greening policy, growing endemic and endangered species of trees covering at least 1/3 of the land area on the campus. When we are planting trees, we have to plant it, but try planting those trees which are endemic and endangered also. मतलब वहीं के हो और थोड़े से endangered हो, जो खत्म होने जा रहे हैं. Okay, this can be done easily. Maintenance activity or the student activity. This year, if you see, the Swachhta 3.0 has been launched. This in the month of September, we will be following Swachhta. Swachhta should be followed throughout the year, but this is like a year. This is the month where we have to do an extra thing. The first thing here is zero waste generation in the campus. How can we do zero waste generation in the campus? Anyone? The event which we are doing, there should be zero waste. How can it be done? Like, for example, sir, in the month of October, your students have planned for some fete or a cultural evening.
how can this be a zero waste program? Anyone? By using environmental friendly items, sir. Like? In place of like drinking water, means mineral water, sir, bottle, we can use sir कुल्हड़, okay, made of sir clay, sir. ऐसा करते हैं सर, बातें वो करें, मतलब प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड, जो हम लोग कर सके, है ना? नहीं सर, एक्चुअली ऐसा है, सर मैं जैसे अपने कॉलेज जैसे हम लोग के कॉलेज में सर अच्छा, हम लोग सर इज टॉकिंग दैट ही डज दीस थिंग्स, यस प्लीज कंटिन्यू सर। जैसे हम लोग सर अपने कॉलेज में मैं प्रॉक्टर भी हूँ सर, तो मैं डरना चाहिए शाम को आपसे। एक बार, जब भी एक बार कॉलेज में सर राउंड लेता हूँ, तो आफ्टर जब क्लासेस 2 बजे के बाद लगभग कम हो जाती है, तो मैं सभी कमरों को चेक करता हूँ। अगर वहां पे फैन और लाइट जल रही है तो मैं सबको बंद करता हूँ, और अन्य जो भी लोग हैं उनको भी ये हिदायत देता हूँ कि आप कम से कम पंखे और लाइट को खुला ना छोड़ें, क्योंकि क्लासेस खाली हो जाती हैं 2 बजे के बाद, तो प्रैक्टिकल की क्लासेस ही रहती हैं। हम यहाँ पे ये सर सब बात जैसे कर रहे छोटी हैं, छोटी चीजें हैं। कोई भी इवेंट अगर हम करें तो वो जीरो वेस्ट कैसे हो। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैंने टोक दिया, आई एम सॉरी सर, कि आपने जब कुल्हड़ की बात की, मुझे लगा कि थोड़ा सा ये इतना शायद पॉसिबल ना होता हो। आप प्लीज बताएं। जो भी एमेनिटीज का हम यूज करें वो सर रिसाइक्लेबल हो। एक्चुअली सर मैं यहाँ सर मैं यहाँ एक भू सेवक नाम का फॉरम चलाता हूँ किलो कॉलेज गुमला रांची यूनिवर्सिटी सर, ओके। तो इसमें हम इस तरह के प्रैक्टिसेस सर कर रहे हैं, और मेरा सर यही टारगेट है, एक जो गोल है सर, एम है, वह है जो पूरे नॉट ओनली इन कॉलेज कैंपस बट कि पूरे डिस्ट्रिक्ट एज ए होल में मैं कुल्हड़ को प्रमोट करूँ, मिट्टी के बर्तनों को प्रमोट करूँ, ओके सर, इंस्टेड ऑफ सर प्लास्टिक। तो ये जो है सर, कई जगह मैंने डीसी से यहाँ जो है आपका उनसे भी बात किया, और इस तरह के इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं, तो ये एक मुझे लगा, और ये काम कर रहा है सर। हम अपने कॉलेज में जितने भी पहले मिनरल वाटर बॉटल्स आते थे, या प्लेट्स, इवन के प्लास्टिक प्लेट्स के जगह यहाँ पे ये सर साल ट्री जो है, वो जिसे हम सखुआ कहते हैं, उसके सर वो बहुलता है, तो उसके पत्तों का बना हुआ प्लेट हम यूज करते हैं। जो भी इवेंट हो रहा है कॉलेज में, हमने उसको प्रमोट किया। इससे 2 फायदे हो रहे हैं, एक तो सर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के डायरेक्शन में हम जो है सर अपने गोल्स को अचीव करने में सफल हो रहे हैं। दूसरी बात जो है सर, जो लोकल पीपल हैं उनके इकोनॉमी को भी हम बूस्ट अप करने में लगे हुए हैं। बाकी जो है वो क्या रहा है, मिनरल वाटर्स को यूज कर रहे हैं, तो ये सारा पैसा जा रहा है उन जो है बड़े बड़े कंपनीज को, और लेकिन अगर हम जो है मिट्टी के बर्तन या फिर जो है लोकल जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उनसे बने हुए प्लेट्स और आइटम्स को अगर हम यूज कर रहे हैं, तो इससे जो लोकल पीपल हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनको भी फायदा हो रहा है। So not only we are just putting our energy towards environmental conservation, but also we are helping in boosting up of economy of those. एक चीज सर, मैं बस एक चीज छोटा सा कहना चाह रहा हूँ। यस सर। आप ये बताइए, प्लास्टिक आई कैसे? सर ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक के अपने भी फायदे हैं। ये प्रॉब्लम क्या आई, जब इसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी नहीं है। यस सर। जो चीज हम प्लास्टिक नहीं था तो पेपर यूज करते थे, है ना? बहुत सी जब व्हेन वी वर नॉट यूजिंग प्लास्टिक, वी वर यूजिंग पेपर। पेपर जो है ज्यादा एनवायरनमेंट के बायोडिग्रेडेबल तो है, लेकिन वो रिसोर्सेस को ज्यादा यूज करता है, वाटर, ट्रीज, है ना, ऑल दीज थिंग्स। व्हाट आई एम जस्ट आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीथिंग, मैं सिर्फ एक थॉट दे रहा हूँ। यस सर। कि कहीं ऐसा ना हो कि हम प्लास्टिक तो हमने छोड़ दी, डिस्पोजेबल, हमने पत्तल में खाना शुरू कर दिया, तो ऐसा ना हो कि हम ट्रीज को ज्यादा तोड़ने लगे। नो सर, एक्चुअली सर वो लीव्स को जनरली कलेक्ट करते हैं, जो कि सर गिर जाते हैं। यस सर। या कोई कह रहा था एक चीज सर, स्टील के बर्तन ले लें बनवा लें। यस, हम ये कहना चाह रहे हैं। अब देखिए वहां प्रॉब्लम क्या आई, हमारी ग्रीड, हमारी आलसीपन, लेजीनेस, कि वो कोई साफ धोता नहीं है उसको, है ना। जैसे हम कोई पार्टी कर रहे हैं तो पहले हम लोग क्या करते थे, वो जो सामान जो है मंगा लिया करते थे किराए पे। अब हमको प्रॉब्लम क्या आई कि अरे वो धुलते नहीं थे,
उनको साफ करना आसान। अरे चम्मच, कोई शादी हुई तो अब चम्मच गिना रहे हैं खड़े होके, ग्लास गिना रहे हैं, कम हो गए, हमको क्या कहते हैं पेनल्टी देनी पड़ रही है। वहीं से तो सब शुरू हुआ ना सर। तो सर एक चीज हमारा मैं ये कहना कहना चाहूंगा। है वापस हम जाएं उसके ऊपर, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल पे। हमारा जो सर अपना मेरा मानना है कि जितना हम रिड्यूस करेंगे चीज को यूज करना, जहां पे जरूरत है, मतलब आई मे बी रॉन्ग बट आई वांट टू टेल वन थिंग, हम क्यों इतनी बड़ी बड़ी क्या कहते हैं चीजें करें जिसमें क्या कहते हैं क्वालिटी ना हो। तो रिड्यूस तभी होगा, है ना। तो ये चीज थोड़ी सी हमको देखनी पड़ेगी, है ना। तो अब एक चीज जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट, हमको सेग्रीगेशन करना है अपने वेस्ट का। क्यों? क्योंकि अगर हम सेग्रीगेशन नहीं करेंगे तो सारा मिक्सअप हो जाएगा। एंड सेग्रीगेशन is very important and it has to be done by us, the producers of the waste. So we have at least two bin system. और अभी अगर आप लोग के कॉलेजेस में भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का लेटर आया होगा तो उन्होंने एक नारा दिया है, हरा गीला नीला सूखा, है ना, टू बिन पॉलिसी। नाउ व्हाट इज दिस? वेट कौन कौन सा होता है? जिसमें वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, रॉटन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेफ्ट ओवर फूड, वो सारी चीजें जो बायोडिग्रेडेबल हो जाए। सूखा ड्राई वेस्ट कौन सा है? सोप कवर्स, मिल्क कवर्स, घी ऑयल पैकेट कैंस, मॉप क्लोथ, न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड्स, ये सारी चीजें जो हैं वो ड्राई वेस्ट है। और इसी का एक तीसरा पार्ट है हैजार्डस वेस्ट, एक्सपायर्ड मेडिसिन, टैबलेट कवर्स, सिरप बॉटल्स, बैटरीज, रेजर्स, कॉन्डम्स, एम्प्टी कैन्स ऑफ टॉयलेट क्लीनर्स, और ये सारी चीजें हैजार्डस वेस्ट में आती हैं। तो हमको सेग्रीगेट करना है। जब हमारे पास कूड़ा वाला आता है तो हम उसको सेग्रीगेटेड वेस्ट दें, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को। वेट वेस्ट अगर आपके पास साधन है तो आप यूज कर सकते हैं अपने घर में कंपोस्टिंग करने के लिए, बट फॉर द ड्राई वेस्ट एंड द हैजार्डस वेस्ट you can give it to the municipal corporation. So this becomes very important. Then we have e-waste, pen drives, phones, everything, like you know that, and laptops, PCs, all these things are there for e-waste. मतलब मैं साथ तो वेट वेस्ट को हम कैसे कर लेंगे? हम कंपोस्टिंग कर लेंगे, बहुत आसान है घर में कंपोस्टिंग करना। जो ड्राई वेस्ट है इसको हमको भेजना है, and it can be used for recyclable purposes. सर एक स्लाइड बैक कर दीजिए प्लीज। जी सर। यदि सर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात कहूं। प्लीज सर, प्लीज। सर क्या है कि ज्यादा खा के हाजमोला मंगाने वाली जो पॉलिसी है ये हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम ज्यादा खा लेते हैं फिर कहते हैं कि हमको हाजमोला चाहिए। ठीक है, तो हमको उचित खाना है, आपको उचित खाना है। जैसे सर हम एक अच्छा ही आपको जैसा मैं एक सर बता दूं कि इससे हमारे जो बाप दादा के जो घर थे, अब देखिए सर वो 25 इंच उनका मतलब 25-30 इंची का दीवार था, लाइट भी कम रहती थी, पंखे भी बहुत कम ही चलते थे, फिर भी हम कोई गर्मी फील नहीं होता था। लेकिन आज आपको 5 इंची का दीवार आपको देंगे तो उसमें कूलर, पंखा, एसी तीनों चाहिए। तो हम ऐसी सिस्टम ही ला दिए हैं जिसमें हम उपभोग ज्यादा कर रहे हैं, और फिर जब हमारे ऊपर आफत आ रही है तो हम लग रहे हैं कि फिर हमको कुछ और भी चाहिए। तो सर हमको ये लगता है कि क्योंकि मैं अभी 4 दिन आपको सेवाग्राम आश्रम में रह के आया, वहां पे सर कोई एसी नहीं है, पंखा है सिर्फ, लेकिन उसकी जो बनावट है जो उसका जो आश्रम का, वो मट्टी, बांस और खपड़ैल इसी से है। और वहां पे इतना मतलब बेहतर है वो कि आप अगर किसी को मौका मिले तो कम से कम जाके देखे वहां पे कि कितना बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो सर मुझे लगता है कि इस पॉलिसी से हमको हटना है।
बिल्कुल, एक्चुअली देखिए सर प्रॉब्लम क्या है, दिस इज In ऑल real द life situation, perils this is ऑफ not possible अर्बनाइजेशन, for us. दिस इज ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन, ग्रीड, है ना। ये सारी चीजें वही है। मैंने आपसे शुरू में अभी 2-3 मिनट पहले जो आपसे कहा था वो यही कहा था कि इतनी बड़ी दावत करने की क्या जरूरत है भाई, है ना। तो वही सारी चीजें हैं। तो इसीलिए सबसे पहली आर क्या है, रिड्यूस। फर्स्ट आर इज रिड्यूस। आप अपनी इन चीजों को रिड्यूस करें, है ना। इस आप ये सोचिए कि हम अपने गार्बेज को मैनेज करने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। कैन मतलब दिस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। So dry waste has to go for an eco-friendly incinerator or for some recycler. And hazardous waste, either it should be used as such as less as possible, or there should be a policy of buyback arrangement. Many places we have a buyback policy. That is called as extended producer responsibility. Under extended producer responsibility, manufacturers of computers and other electronic items should take back end of life products. So this is how like things can change. So remember, students can be given assignment on waste management, good sanitation and hygiene practices, water conservation, and campus greenery and energy conservation. And we can utilize these days, World Wetland Day, World Water Day, Earth Day, Population Day, Toilet Day, अभी आ रहा है November 19th को, है ना। So these can be used to motivate our students and the community for environmental purposes. So this is something which we have to take care of. This is our university. This is how we enter into it, is, and this is called as, this place is Stretchy Hall, where we have our Independence Day and Republic Day program and other programs. We are doing a bit for environment. We are using a mechanized machine. अब इससे क्या फायदा होता है कि इससे डस्ट कम उड़ती है। जो नॉर्मल स्वीपिंग हम स्ट्रीट्स पे करते हैं तो उससे डस्ट बहुत आती है। इससे क्या होगा, ये डस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है ना, और थोड़ा सा सॉइल इरोजन भी कम होता है। ये तो खैर पक्की सड़क है, लेकिन ओवरऑल वी कैन यूज दिस, पीपल आर यूजिंग इट, है ना। ये अंदर की तरफ। और फिर देन वी हैव द कैंपेन्स, garbage removable. We have partitions for that, the gila kooda and sukha kooda, है ना, partition. Then vector control, है ना. This warrior is going for fogging, and see, his protection is equally important, है ना. He is well dressed for the occasion, है ना, not in that sense, but for his personal safety. So we are doing this. So this is how we can do it in our campus. So apparent interventions can be safe water, safe food, and safe environment to prevent fecal-oral transmission. So we should use as less of plastic as less. Not only plastic, anything which uses our resources. Less of water. Like, we don't stop drinking water. I'm not saying that stop drinking water, but use of water for other things, है ना. जैसे पोछा लगाना और घर को धोने में अंतर है. Are you getting my point? जो हम लोग धोते हैं उसमें पानी ज्यादा वेस्ट होता है, और पोछा लगाने में पानी कम इस्तेमाल होता है. हाँ, रोल ऑफ सिटीजन इन कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे
people were giving some doable examples. So change in the collective mentality. ये हंसी मजाक हर चीज की जो mentality है ना, उसको थोड़ा हमें कम करना पड़ेगा. ये I don't know, I don't want to say anything against anybody, but ये हमको ना, हम थोड़ा वेस्टर्न सोसाइटी को एप करने लगे हैं हर चीज में मजाक करने में. अदरवाइज हमारी जो अपनी सभ्यता है वहां पे ऐसा नहीं है. अब बताइए, like if there is somebody with a broom and having a photograph, हम कहेंगे फोटो सेशन है. अरे भाई ये फोटो सेशन नहीं है, ये मोटिवेट करना है, इग्नाइटिंग द स्पिरिट. के हमारे देश का प्रधानमंत्री, गवर्नर, ये अगर झाड़ू उठा सकता है तो हम क्यों नहीं उठा सकते. ये है मकसद इसके पीछे का. डोंट गो कह रहे हो तो वहां पे हरे पत्ते पड़े हुए थे. भाई हरे पत्ते नहीं है, ये एक ड्राइव चल रही है आपको मोटिवेट करने के लिए. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप देखें जो सबसे इफेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका है वो यहाँ पे देखिए अभी भी रिड्यूस है, फिर रिफ्यूज, फिर रीयूज है, फिर रिसाइकिल है. तो रिड्यूस इज समथिंग व्हिच हैव टू बी डन. रिडक्शन इन वेस्ट, मिनिमाइज्ड लिटरिंग एंड पॉल्यूशन will pave way for a healthier and productive state of minds. So this has to be taken care of. Government is doing this. अपनी बात वही, brand ambassadors आ रहे हैं, they are motivating us. College and universities, since they are temples of learning, they have an important role to play in the development of this attitude. ये formative years of life है हमारे students के, है ना. अगर हम अभी उनको इसके ऊपर इम्प्रेस कर देंगे तो वो जिंदगी भर ऐसा करेंगे. सो दिस was all about things which can be done, which something which can be done better. अगर किसी को कुछ कहना है तो please, I know I took 5 minutes extra, but it was an interactive session. So if you want to add something or something like that, you can always say. Okay, please. Or otherwise we can. Sir, yes, please. सर मुझे बात करनी है. जी प्लीज आप फरमाएं. सर मैं जी बताएं. सर हम एक नागरिक होने के नाते, एक माँ होने के नाते और एक टीचर होने के नाते हमारे अलग अलग रोल्स होते हैं सर. तो जब हम खुद से कोई काम कर रहे होते हैं, अगर एक टीचर खुद से एनवायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर हर वक्त शो कर रहा है कि जैसे रूम से निकलने के बाद वो खुद लाइट ऑफ कर रहे हैं, अगर ना भी हम कहें तो बच्चे हमें सीख लेते हैं सर. और अगर एक मदर जो रोल प्ले कर रही है कि वो अगर घर पे ही ड्राई कूड़ा अलग और वेट कूड़ा अलग खुद से डाल रही है, तो बच्चे दूसरे को सिखाने से पहले अगर हम खुद करें सर तो वो ज्यादा बेहतर साबित होता है. क्योंकि हर व्यक्ति अगर खुद सुधर जाए तो समाज, पूरा समाज व्यक्तियों से मिलकर ही बनता है, तो समाज खुद ही सुधर जाएगा सर. बिल्कुल. लीडिंग बाय द एग्जांपल, है ना मैडम. बिल्कुल ठीक कहा आपने सर. ओके मैम. So let's call it a day. Thank you so much for your patient hearing. Thank you so much. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir.